Very good morning to all of you. Today the session is for class 9th, in which we are going to discuss the chapter Force and Law of Motion. In my previous session we discussed about the definition of force. We discussed about how we can define or how we can judge about the force. We discussed about the law of motion. In first law of motion, inertia has been derived from second law of motion. After the definition, I told it to you that the formula for force has been derived, and from the third law of motion. In my last session, I repeated the thing that we discussed about the conservation of momentum. In my previous session, I told it to all the students, those who are watching me live or on my YouTube, that we are supposed to discuss the remaining thing by tomorrow. So this one is my second session. Next session, in which we are going to discuss about the second law of motion as well as third law of motion with their derivation. So today I am here to give you the explanation that how we can derive the formula for force from the second law of motion and conservation of momentum from the third law of motion. So actually, what is momentum? What is momentum? Momentum है क्या? क्या है momentum? मोमेंटम को हिंदी में बोलते क्या हैं? एक्चुअली एज पर CBSE guidelines I have to repeat or I have to explain each and everything in English, but due to the surroundings I have to convince you, I have to explain each and everything in English as well as in our mother tongue. संवेग को हिंदी में मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं. संवेग से ही आपको पता चलता है वेग के साथ मीन्स व्हाट? समथिंग इज कैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी. क्या जो कैरी हो रहा है वो क्या है? इट मीन्स इट कंटेन्स मास. इन फिजिक्स if anything is present then definitely it contains some mass. So momentum is nothing. This one is a clear cut representation of mass into velocity. संवेग is equal to संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण. So m is equal to मात्रा गुणे वेग. So m is equal संवेग which is denoted as p, that will be equal to mass into velocity. अर्थात p is equal to mv. So the formula for finding the momentum is denoted as p. P is equal to mv. P is equal to mv. So here I wrote it that for momentum p is equal to mv. So for any object, now you have to consider that any object which starts with velocity u and ends with velocity b, ends with velocity v. So u is the final velocity, v is the u is the initial velocity, v is the final velocity. अर्थात प्रारंभिक वेग जो है वो u है और अंतिम वेग जो है वो क्या है? v है. So here I wrote if initial velocity is u, final velocity is v. So for the initial velocity position, position, what is I am writing momentum 1 is equal to m into u, because at that point the velocity is u, initial velocity. For the final position, momentum 2 is equal to m into v, because v is the final velocity. So now we have to consider that if the velocity of any object is going to change, then definitely it will take some time. It will take some time to either increase or either decrease. Either like it will be in the positive magnitude or either it will be in the negative magnitude. But definitely before moving or before changing the velocity from u to v, definitely it will take some time. So I wrote it here that the time taken for the change in velocity, that will be counted as, or that will be represented as t. So here I wrote t. Now
again according to the first law of motion, what I told it to you, that any body or any object wants to either remain in the position of rest, either remain in the position of motion in a straight line until an applied force is not applicable on the object. अर्थात कोई वस्तु अपने विरामावस्था या गति की अवस्था को सरल रेखा में तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो. Here what I am seeing that the initial velocity is u, the final velocity is v. It means something force is acting on the object. Some force is acting on an object. So here I wrote it to you that constant force applied on an object for the variation in or for the change in the velocity, that will be f, that will be represented as f. So simply now if at position 1 the momentum is at initial position the momentum is mu, at final position momentum is mv, then simply if we have to calculate or we have to find out the change in momentum, then what we will do? Simply we will subtract the initial momentum into the final momentum. We will subtract the initial momentum into the final momentum. So the change in momentum is equal to mv minus mu. The change in momentum is equal to mv minus mu. Here I wrote it mv minus mu. Now mv minus mu is nothing but change in momentum. If in physics the term like the rate of change term will be applicable, it means what? The next step or the next process is nothing but simply the rate of the rate or the rate of term. The meaning of the rate of term is nothing but simply we have to measure the change with respect to time. We have to evaluate the changes with respect to time. So here what I wrote, the rate of change in momentum is equal to mv minus mu by t. T is nothing, the time taken for the having the change. T is equal to time taken by an object for having the change. So simply the change in momentum, it means final momentum minus initial momentum. But if the rate term will used, then we have to calculate the change in momentum with respect to time. आपको जो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है जिसको कि आप सिर्फ माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके प्राप्त कर रहे हैं, उसको समय के अपेक्षा समय के तुलना में उसको व्यक्त करना है. वी हैव टू एक्सप्रेस. सो mv minus mu by t, mv minus mu by t. So in other words, the rate of change of momentum is known as applied force. So here F समानुपाती F is proportional to mv minus mu by t, mv minus mu by t. So in other words, what is the formula for acceleration? Final velocity minus initial velocity by time. Okay, so here on the behalf of that I wrote it, F is proportional to m into a, F is proportional to m into a, and in the last step what I wrote, F is equal to k into ma, F is equal to k into ma, where k is known as constant, where k is known as constant. So in my last class I told it to you that if we have to replace the proportional sign by equivalent sign, then we have to suppose that we will use some constant. So here I wrote k, I mentioned k. So actually होता क्या है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि अभी 9th में 10th में हम लोग हमेशा जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है, बट F इज इक्वल टू ma होता नहीं है. वेन एवर यू विल इंटर इन टू द इंजीनियरिंग सेक्शन, इन द हायर सेक्शन, देन ओनली यू विल नो द वैल्यू ऑफ k. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ k, आखिर k की क्या महत्व है. हमेशा याद रखना है कि k एक नियतांक होता है जो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ ही वो मल्टीप्लाई होता है, और वो हर परिस्थिति के लिए भिन्न भिन्न होता है, हर परिस्थिति के लिए भिन्न भिन्न होता है. सो ऑलवेज वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ओनली वी विल find out the formula of F force, which is equal to k into ma, where k is a constant. Now I told it to you in my previous session that
In my next class we will discuss the derivation, what comes out from the second law of motion and what will comes out from the third law of motion. तो कल हम लोग पढ़े थे कि वेलोसिटी, रिक्वायल वेलोसिटी, कि भाई दैट विल बी इक्वल, गोली चलती है, अगर आगे की ओर एक्सेलरेशन होता है तो एक झटका पीछे की भी ओर लगता है, एंड दैट एक्चुअली इन सिंपल मैनर वी कैन टेल दैट ऑलवेज for the balancing of force, if particular force will move into the right direction, then on the same object it will be in the back direction and the value will be equal. Such kind of concept we have to study in the third law of motion. So on the behalf of the third law of motion, we have to find out or we have to derive the conservation of momentum. Conservation of momentum, it means what, कि वो कहना ये चाहता है कि कभी भी जो टोटल मोमेंटम किसी भी दो ऑब्जेक्ट, लाइक वी आर हैविंग द पेन, अब कोई वस्तु ये आगे जा रही है, ये पीछे से आ रही है, अब दो गाड़ी ही ले लो ना तुम, दो गाड़ी है, ये कार ए है, ये कार बी है, अब ये अगर टकराती है तो डेफिनेटली है कि इट इज हैविंग द वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो हैविंग द वेलोसिटी। ये जब टकराएगी तो टकराने के बाद जब दोनों बढ़ी तो जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो बराबर होता है। इसी चीज को हम लोगों को समझना है कि जो कुल संवेग होता है उसमें टकराने के पूर्व और टकराने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को अब जैसे आपको ड्यूरिंग द डिफिनीशन ऑफ एनर्जी आपको बताया गया होगा कि भाई जो ऊर्जा होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा जो है कभी शून्य नहीं होगी, जो ऊर्जा आपने खर्च की ना उसका सिर्फ रूपांतरण होता जाता है, ओनली चेंजेस टेक्स प्लेस। सो ऑन द बिहाफ ऑफ और जस्ट लाइक दैट हियर ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू से यू दैट इफ द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी विच इज हैविंग द वेलोसिटी v and u, if or two kind of velocity, if they will strike, so before striking the total momentum is equal to after striking the total momentum. This thing we have to today discuss that how it is possible. So here I am explaining you with example and picture. So just check it once. Here I take an object which denotes as MA. मैंने एक वस्तु ली जिसका MA रखा नाम, मास जो है MA है, और दूसरी वस्तु है MB है। अब जो MA है, the object which is having the mass of MA before collision, we are supposing that that one is having the velocity of UA, और जो MB है उसका UB है। याद रखना, दो ऑब्जेक्ट है, दो कार है, एक कार का मास जो है MA है, एक कार का MB है। जो MA है उसका जो वेलोसिटी है बिफोर स्ट्राइकिंग वो क्या है, UA है, और जो दूसरा है उसका UB है। ठीक है, अब हम लोग समझ रहे हैं कि भाई हाँ दो वस्तुएं हैं। अब दो वस्तु जो है इस तरह से इधर जा रही है, तो ये हुआ। अब पॉइंट 2 कोलिजन टेक्स प्लेस, टकराया, पीछे वाली जो वस्तु थी उसने आगे वाली वस्तु को ठोका। सो हियर द कोलिजन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस MA MB विच इज डिनोट्स एज A एंड B। अब जब दो वस्तुएं ठुकती हैं तो एक सामान्य चीज देखना, चीजों को जब मैं सरल करूंगा ना तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। अगर कोई कार पीछे से आकर आगे वाली कार को ठोकती है तो क्या क्षति सिर्फ आगे वाली कार को होती है या क्षति सिर्फ पीछे वाली कार को होती है? जवाब तुम दोगे कि नहीं भैया, क्षति तो सर दोनों कारों को होती है। इट मीन्स व्हाट, यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट कि द कार which is behind the first car, if that car is applying a force on the front car, then at the same time this car also applying the force on the second car. दोनों कार जब टकराती है तो ये कार अगर इस पर बल लगा रही है तो उसी वक्त यह कार भी उस पर बल लगाती है। इस चीज से आप इत्तेफाक रखेंगे। तो यही चीज हमने यहां दिखाया। अब जब दोनों लग रहा है तो अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इफ एनी फोर्स बाय कार ए will be in the right hand direction which is going to represent as FAB, then same time
the car B is also applying a force on car A which is going into the back direction, denotes as FBA. ठीक है, this one is the position of collision, this one is the representation of collision. अब टकराहट तो हो गई, अब उसके बाद फिर कार आगे बढ़ी टकराने के बाद, तो मास तो उसका वही रहा, पहली कार का MA रहा, दूसरी कार का MB रहा. फर्क क्या हो गया कि जो धीरे थी कार वो थोड़ी तेज हो गई टकराने के बाद, और जो तेज थी वो थोड़ी धीरे हुई. इट मीन्स व्हाट, द चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस. इट मीन्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस आफ्टर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन. तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया फाइनल वेलोसिटी के आधार पे, MA के लिए VA एंड MB के लिए VB, MA के लिए VA एंड MB के लिए VB. सो अब हम A के तुलना में हम नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम फॉर द कार A. सो चेंज इन मोमेंटम फॉर कार A इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी MA इंटू VA माइनस UA बाई T, रेट ऑफ चेंज आपको पता है. नाउ फॉर B MB VB माइनस UB बाई T. अब इसको तुम बड़े चीज में समझ लो कि नाउ वी विल कैलकुलेट लाइक MA UA माइनस MA VA. अब इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो नाउ MA VA माइनस MA UA बाई T, तो M विल बी MA इज कांस्टेंट, MA जो है वो कॉमन है, सो वी विल टेक आउट आउटसाइड द MA. सो नाउ वी कैन राइट MA इज अंडर ब्रैकेट VA माइनस UA बाई T फॉर कार B MB VB माइनस UB बाई T. हो गया दोनों का. अब क्या है, अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन चले गए कि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA. मतलब जो इधर फोर्स लगा, जितनी ताकत से इस पे फोर्स लग रहा है, जस्ट अपोजिट ये भी उस पे फोर्स दे रहा है. सिर्फ क्या है, डायरेक्शन चेंज. इसका फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसके फोर्स का डायरेक्शन ये है. तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA. अब इस पर इस दोनों को रखते हैं. MA ब्रैकेट VA माइनस UA बाई T इज इक्वल टू माइनस साइन होगा चूंकि माइनस BA है, माइनस MB ब्रैकेट में VB माइनस UB बाई T. हेयर इन द बोथ लोअर सेक्शन we are seeing that T is common, so we will cut the T. Now we can write MA VA minus MA UA is equal to minus MB VB plus MB UB. We will change the position. इसको उठाया इधर डाला, इसको उठाया इधर डाला. सो फाइनली वी कैन गेट MA VA प्लस MB VB इज इक्वल टू MA UA प्लस MB UB. MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB. आप सिंपली देख लिए कि कैसे इस चीज को समझने के बाद MA VA फॉर दिस वन, MB VB फॉर दिस वन, मतलब टोटल जोड़ दिया, इज इक्वल टू इस दोनों का जो मोमेंटम है वो जोड़ दिया. सो इजिली वी कैन फाइंड आउट दैट आफ्टर deriving these things, easily we can see and examine that how the total momentum before collision is equal to the total momentum of after collision. So this one is the funda, the sum of the total momentum before collision is equal to the sum of total momentum after collision is known as conservation of momentum, is known as conservation of momentum. So up to now what we discussed, definition of force, example of force, that force is not only responsible for the change in position or change in shape, but it will also measure on the cost of trying to change or trying to change the position or trying to change the shape. Afterward, first law of motion, second law of motion, third law of motion, in which we discussed about the inertia from the first law of motion, the formula for finding the force F is equal to K into MA on the by the help of second law of motion, and conservation of momentum on the behalf of third law of motion. So now afterward you can see that there are some questions in page number 125 NCERT, which is simply based upon the third law of motion. It means simply on the logic of FAB is equal to minus FBA. FAB is equal to minus FBA. So you can solve it and you can send it on my WhatsApp number. Thank you. Have a great day.